Alright, so guys, welcome back to the Vokl Youth podcast. This is our fourth podcast, and हमारा second podcast है with a guest. Today we have a very interesting guest with us. His name is Mr. Arjun Gupta. He's a psychologist and also a business owner. उनके business का नाम है Mind Tuition and वो psychology के regarding ही उनका business है. Yeah, and in this podcast we have discussed about a lot of things, brainwashing, body language, और भी काफ़ी सारी interesting conversation हमने की है. तो make sure to watch this podcast till the end, or let me know what you think about this podcast. Any feedback or something like that, you can like comments are always open. So yeah, it's like काफ़ी सारी cool चीज़ें हम इस बार discuss करेंगे about psychology and lot of stuff. So yeah, Ruta sir, are you there? Okay, so thank you for joining. Obviously, you are our second guest on our podcast. And we actually thought of because you are a psychologist and our audience our base is also like interested in psychologists सबको मतलब कि questions थे Yeah, psychologist yeah. so before inviting you एक दिन पहले हमने Story Instagram में भी डाली थी. अपना स्टोरी डाली थी कि psychologist से क्या क्या questions थे Right. तो So we got a very interesting question, right? So basically, what is the difference between psychologist और psychiatrist? Okay. और ये मेरे को भी सेम क्वेश्चन था, लाइक मैं भी थोड़ा डाउटफुल स्टेज पे था कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है. तो लाइक इफ पॉसिबल कैन यू गिव अ लाइक डिफरेंट क्या चीजें होती है साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट. तो साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट बेसिकली अलग लेवल्स पे ट्रीटमेंट करते हैं जब Right. ट्रीटमेंट की बात आती है और हमारी एजुकेशन भी डिफरेंट होती है. सो साइकाइट्रिस्ट हैज टू गो थ्रू एमबीबीएस एंड उसके बाद स्पेशलाइजेशन होती है साइकाइट्री में फॉर Right. 3 इयर्स पीजी में जो होती है. साइकोलॉजिस्ट ऑन द अदर हैंड वी हैव अ बैचलर्स बीए बीएससी इन साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी फॉलोड बाय अ मास्टर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी और साइकोलॉजी नॉर्मल साइकोलॉजी जिसमें हमारी 1 साल की स्पेशलाइजेशन होती है क्लिनिकल साइकोलॉजी में. Right. Right. एंड इसके बाद अगर आप डिप्लोमा करना चाहो एंड द स्टडीज कैन गो ऑन एंड ऑन. सो अगर आप इसके बाद एमफिल करते हो तो यू बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड इफ यू डू अ डिप्लोमा यू कैन बी अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. तो मास्टर्स के बाद यूजुअली लोग आपको साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं. साइकाइट्रिस्ट यूजुअली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं. दे ट्राई टू फिक्स योर ब्रेन केमिस्ट्री ब्रेन केमिकल्स. Whereas psychologists focus mostly on the thought patterns, the behavior patterns, the emotional responses that we have. So level of analysis ही different होता है. So the psychiatrists they focus a lot on the brain chemistry, and psychologists focus more on the mind, behavior and work. Got it. Got it. Like जो physical brain होता है उसके लिए psychiatrist होता है, if I'm not wrong, right? Yeah. Got it. Oh, that's it. basically any malfunction with the brain मतलब कि उसको treatment करना and psychologist like more about behavior and how does he Yeah. so उसी के लिए मेरा क्वेश्चन था लाइक पीपल से कि ब्रेन वॉशिंग होती है लाइक ब्रेन वॉशिंग सो एग्जैक्टली लाइक साइंटिफिक रीजन क्या होता है मतलब कि तुमको पता होता है जैसे जो वो होते हैं टेररिस्ट जो होते हैं उनको पता होता है कि ये गलत काम है बट बोलते हैं उनका ब्रेन वॉश करते हैं तब वो ऐसे टेररिस्ट बनते हैं तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट ब्रेन वॉशिंग ब्रेन वॉशिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जितना इट्स बेसिकली जस्ट गिविंग यू इनोकुलेशन होती है. व्हेन यू आर ट्राइंग टू कन्विंस समवन you have to convince them of the counter arguments that the other person will give you. And जैसे आप टेररिस्ट की बात कर रहे थे तो टेररिस्ट को पता होता है कि ये गलत काम कर रहे हैं हम लोग वी आर किलिंग पीपल विच इज नॉट राइट बट दे फील लाइक इट इज नेसेसरी. दे फील लाइक इट्स फॉर द बिगर कॉज एंड उसके लिए थोड़ा बलिदान देना पड़ता है. वी हैव टू डू सम रॉन्ग टू फॉर द ग्रेटर गुड. तो वो जब फॉर द ग्रेटर गुड को आप एक बार किसी को कन्विंस कर लेते हो कि थोड़ा बहुत तो आपको टेढ़े काम करने पड़ेंगे कुछ अच्छा पाने के लिए. दैट इज बेसिकली व्हाट ब्रेन वॉशिंग इज. ब्रेन वॉशिंग ऐसे नहीं होता कि आप उनको बिठा के उनको टॉर्चर करते रहते हो और उसके बाद जाके वो आपके एकदम गुलाम बन जाते हैं. इट्स genuinely just convincing them of doing what you want them to do in spite of the cost associated with it. Right. That's right. So like how you got into psychology? Like मेरा ये क्वेश्चन है लाइक क्योंकि काफी बचपन से लाइक मेरे को तो टर्म भी नहीं पता थी जब मैं लाइक 6th-7th क्लास में था. मेरे को बाद में जाके पता लगा जब लाइक तब तो इंडिया में नॉर्मली टैबू रहता है ना साइकोलॉजी के बारे में इतना लोग डिस्कस करते नहीं है. सो आपको कैसे पता लगा एंड हाउ यू गॉट इनटू दैट? So 2015 में मैं MBBS के लिए तैयारी कर रहा था एंड आई गॉट इनटू एन MBBS प्रोग्राम पीजीआई रोहतक में.
तो मेरे पापा मेरी बहन वहीं से ग्रेजुएट किए थे, देर बोथ डॉक्टर्स, तो मेरे को था कि मैं भी उनकी तरह डॉक्टर बनूंगा एंड आई विल बी अ सर्जन लाइक हिम। लेकिन फॉर सम रीजन इन 2015 आई जस्ट स्लिप्ड इनटू वेरी सिवियर क्लिनिकल डिप्रेशन, वेरी सिवियर, एंड देयर वाज नो रीजन फॉर इट। एंड अब उस टाइम मैं 17 साल का था, और तब तो यही होता है डिप्रेशन का कि ऐसी ही होती है, ज्यादा खास नहीं होता। कमजोर लोगों को होती है, ऐसे थोड़ी हो जाता है किसी को भी किसी की वजह से। तो फॉर 18 months आई डिड नॉट एक्सेप्ट दैट आई हैड डिप्रेशन। मेरे को ऐसा था कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन कुछ मैंने कुछ गलत कर दिया होगा, मेरे को अपने कर्मों के कुछ फल मिल रहे होंगे, लेकिन मेरे को बीमारी नहीं, ये बीमारी नहीं हो सकती। इंडिया में टैबू तो है ये चीज का। एग्जैक्टली, बहुत, मतलब आई हैड साइकाइट्रिस्ट टेलिंग मी दैट आई वाज इल, आई हैड साइकोलॉजिस्ट टेलिंग मी आई वाज इल, आई हैड माय पेरेंट्स टेलिंग मी आई वाज इल, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था कि भाई डिप्रेशन कमजोर लोगों को होती है और मैं तो Right. कमजोर बिल्कुल नहीं हूँ। एंड फिर उसके बाद आई थिंक मैंने एक दिन बहुत पब्लिकली, बहुत ऑनेस्टली, ओपनली शेयर किया कि मेरे को लोग बोलते हैं कि मेरे को डिप्रेशन है एंड आई नीड सम हेल्प विद दैट। तो उस टाइम लोगों ने काफी सपोर्ट किया, एंड जैसे मैं रिकवरी शुरू हुई मेरी, आई स्टार्टेड कोऑपरेटिंग विद साइकोलॉजिस्ट मोर, स्टार्टेड कोऑपरेटिंग विद साइकाइट्रिस्ट मोर, थोड़ा ओपन अप होना शुरू हुआ। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार एमबीबीएस की पढ़ाई मेरे से नहीं होगी, क्योंकि दैट इज अ वेरी इंटेंस कोर्स, 5 years, एंड आई वाज इन अ वेरी सेंसिटिव प्लेस एज इट इज, कि फिर से उसको 5 years, फिर से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना, आई हैड ऑलरेडी हैड 2 years ऑफ ड्रॉप ईयर बीच में, तो मेरे से नहीं होगा। तो आई वेंट टू समथिंग दैट वाज अ बिट मोर रिलैक्स्ड, टू बी ऑनेस्ट। जब मैं साइकोलॉजी में गया, एंड मेरे को लगा साइकोलॉजी विल बी एबल टू आंसर सम ऑफ माय क्वेश्चंस आई हैड एज वेल, कि मेरे को हुई व्हाट कुड हैव डन डिफरेंटली, and what can I do to help others who are in such a situation as I was. So that's when I got into psychology in 2017. I thankfully मेरे boards में अच्छे नंबर आए थे, even though boards में मैंने कुछ नहीं किया था 12th में. So I got into a decent college in DU, and that's when I started in psychology. That's interesting. मेरे को like अभी जैसे आपने कहा था कि लाइक बोर्ड्स में या फिर घर वालों के प्रेशर की वजह से, आपका तो चलो वो था कि आपके पापा सर्जन थे तो आपको भी थोड़ा सर्जन बनने का था, बट इंडिया में बच्चों को प्रेशराइज करा जाता है कि आपने यही करियर पाथ लेना है, आपने यही करना है। उसकी वजह से जो मेंटल प्रेशर करते हैं पेरेंट्स, उसको लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। थॉट्स ऑन दैट? Absolutely, and हम जब बच्चे होते हैं तो हमें ठीक लगता है कि पेरेंट्स हैं तो उन्हें पता होगा क्या करना चाहिए, हमें भले के लिए ही कर रहे हैं and stuff like that. भले के लिए कर रहे हैं, हम जो चाहते हैं, मतलब कुछ सोच के ही बता रहे होंगे, मतलब नीयत तो उनकी गलत नहीं होगी। लेकिन जो टीनेज ईयर्स होते हैं, से 15 to 24 की जो एज होती है ना, वहां पे वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट वी आर आवर ओन पर्सन, वी आर आवर ओन पीपल, वी आर इंडिविजुअल्स। ऐसा नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स के ही बच्चे हैं या फिर अपने सिबलिंग्स के भाई हैं, हम खुद के थॉट्स पैदा करने लगते हैं, खुद की आइडेंटिटी बनाने लग जाते हैं इस एज पे। एंड कई बार इस चीज में सिर्फ 2 ऑप्शंस होती हैं, स्पेशली जब आपके पेरेंट्स से प्रेशर होता है। यू ईदर गिव इन टू द आइडेंटिटी दैट दे गेव यू, कि उन्होंने जो बोला था बस वही करना है, उन्हीं के चरणों में रहना है, उन्हीं के हिसाब से रहना है, जैसा वो कहेंगे वैसे ही करना है। और यू स्टार्ट फीलिंग द प्रेशर कि हमें कुछ और करना है, लेकिन पेरेंट्स को कुछ और करना चाहते हैं, एंड दैट्स वेयर अ लॉट ऑफ दीज स्ट्रगल्स स्टार्ट। राइट, एंड लाइक टीनेज के अंदर तो बुलिंग भी बहुत चलती है, राइट? एंड लाइक काफी लोग उसको ऐसे ही छोड़ देते कि यार इट डजंट अफेक्ट एंड स्टफ लाइक दैट, राइट? सुबह 5:30 बजे वॉक करने जाओ, मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी एंड स्टफ लाइक दैट। सो लाइक इट्स एक्चुअली ट्रू, राइट? मतलब अगर सुबह जल्दी जागो, डज दैट अफेक्ट द ब्रेन, लाइक फॉर नाइट आउल्स या जो भी लोग हैं? नॉट रियली, इट्स वेरी इंडिविजुअल। ऐसे हम ना ब्रेन पे इतना फोकस करने लग जाते हैं, वी फॉरगेट कि ब्रेन इज एन ऑर्गन, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अ कॉन्शियस एक्सपीरियंस दैट वी हैव, जो हमारे माइंड से प्रोड्यूस होता है। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू वेकिंग अप अर्ली, टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। कुछ लोगों को काफी हेल्प मिलती है सुबह उठ के, क्योंकि उनके फिर दिन में एक स्ट्रक्चर आ जाता है कि इस टाइम उठो, फिर उसके बाद ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, एंड दैट स्ट्रक्चर हेल्प्स अ लॉट। क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड लाइफ इज वेरी chaotic एंड इट कैन गेट वेरी ओवरवेलमिंग फॉर अ पर्सन। तो कुछ लोगों को जिनको हेल्प मिलती है वो इस वजह से मिलती है कि इट एड सम स्ट्रक्चर टू योर लाइफ। और अब मैं जैसे खुद 2-2:30 बजे सोता हूँ रोज,
मेरे को सुबह जल्दी उठाओगे तो मैं बस सोते सोते ही चलने लग जाऊंगा इधर उधर. इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस. आई एम Right. जस्ट अ डिफरेंट पर्सन. So Same. if it works for you, great. If it doesn't work for you, it's not your fault. Got it. That's great. तो एक और वो था मतलब कि अब साइकोलॉजिस्ट बिकॉज यू स्टडी बिहेवियर, लोग बोलते हैं बिहेवियर में बॉडी लैंग्वेज इज वेरी एसेंशियल. तो व्हाई एग्जैक्टली इज बॉडी लैंग्वेज essential in And want mainly to in yeah, interviews. and also want to add one more question, like behavior के लिए एक अलग से साइकोलॉजिस्ट है, बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट, या जो बिहेवियर को जस्ट देखते हैं, like body language and stuff. So psychology में ना जैसे schools of thought है कई सारे. तो एक स्कूल ऑफ थॉट था बिहेवियरिज्म, जो 19th सेंचुरी पूरी 20th सेंचुरी में बेसिकली वही चलता था, जिसमें बोलते थे कि भाई हम लोगों के थॉट को नहीं समझते. वो अंदर की चीजें हैं, वो लोगों के समझ, हमारी समझ के बाहर हैं, साइंस की समझ से बाहर रहेंगे. सो विल ओनली स्टडी बिहेवियर. जो एक्सटर्नल बिहेवियर है, अगर कोई अच्छा बिहेव कर रहा है तो हम उसे रीइंफोर्स करेंगे, विल गिव देम रिवॉर्ड्स ताकि वो फिर से वही बिहेवियर करें. अगर कोई बुरा बिहेवियर करेगा तो हम फिर हमें पनिशमेंट देंगे ताकि वो फिर से वो बिहेवियर ना करे. हम बस इतने पे ही फोकस करेंगे. बॉडी लैंग्वेज इज एक्चुअली अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक इन साइकोलॉजी, क्योंकि there's new theories that are coming up of emotions which say body language is not real, which says that body language does not have any empirical basis or scientific basis नहीं है इसका कुछ. Right. हमने बस बना रखा है इसको. बट फिर ये भी होता है कि भाई अब जैसे मेरे को रुद्राक्ष थोड़ा आंखें नीचे करके रखे और रिस्पॉन्ड ना करे, तो फिर आई विल फील लाइक ही इज डिस्कनेक्टेड समवेयर ना. Right. ऐसा तो नहीं है कि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है. तो विच इज व्हाई बॉडी लैंग्वेज इज वेरी कंट्रोवर्शियल, इम्पोर्टेंट एंड कंट्रोवर्शियल, कि ऐसा होता भी है कि नहीं. क्योंकि बॉडी लैंग्वेज को जो हमने बना रखा है ना, इट सेज दैट 90% ऑफ ऑल कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल, एंड दैट मीन्स दैट our body language might sometimes give you a signal which we don't want to give you, right? अब जैसे याद है जब रिया चक्रवर्ती का एक इंटरव्यू हुआ था 2020 में, aware of that. Yeah. मतलब एकदम it was all very, it was very passionate, the way people were analyzing it. Yeah. And उसमें एक बंदे ने ऐसे पूरा बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस किया that she's lying, Yeah. कि इसने मारा है, that she that I have proof, body language proof that she is the person who killed him. And how do you disprove that? How do you falsify that? कि अब भाई मैंने गलती से अपनी नाक छू दी बोलते बोलते, वो क्या यार गलती से. वो unintentionally होते ये चीजें. Exactly. A lot of things happen unintentionally, a lot of things happen momentarily, and body language ऐसे उसको करती है कि that ours is the ultimate truth. हमने ऐसा कुछ बता दिया जो वो बताना नहीं चाहते थे. Right. And इस लेवल पे it's not very reliable. अगर कोई ऐसे ऐसे क्लेम्स करता है बॉडी लैंग्वेज के कि इससे आप लोगों के दिमाग पढ़ सकते हो, इससे आप लोगों को डिटेक्शन कर सकते हो. आपको काफी लोग बोलते होंगे कि read my mind. No. Read my mind. Can you tell me if I'm lying? Can you tell me what I'm thinking? If I'm trying to hide something, will you be able to tell? हाँ, मेरे को सब पता है. Yes. I know everything about you. I know you're having an affair. स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, बट उसके बाद फिर बोर हो जाता है इंसान आफ्टर टाइम कि सारे लोग सेम ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं. वैसा ही जैसे अभी कोई अगर सपोज जैसे मैं अभी कॉलेज में हूँ, मैं उसका सीएस का कोर्स कर रहा हूँ. अब मेरे को लोग आगे पूछते हैं सीएस का कोर्स करने का तू फेसबुक हैक कर सकता है, इंस्टाग्राम में तू मेरी आईडी खोल सकता है. तो इट्स लाइक सेम, लाइक दो अलग चीजें होती हैं वो. अब बिहेवियर का वो कभी वो नहीं हो सकता कि अगर मैं साइकोलॉजिस्ट बन गया तो ऑब्वियसली बिहेवियर में आप जान सकते हो मेरा, मैं अभी क्या मेरे मन में क्या चल रहा है. राइट. यार साइकोलॉजिस्ट, हाँ सॉरी टू इंटरप्ट, साइकोलॉजिस्ट के साथ ना एक पॉइंट पे लोग इतना मानने लग जाते हैं इसको, दे डोंट वांट टू टॉक टू अस. या सो आई वाज टॉकिंग टू अ साइकोलॉजिस्ट हु कोविड-19 में उसके साथ कोई नेबर थे उनके, एंड द नेबर नेवर टॉक टू देम कि भाई तुम साइकोलॉजिस्ट हो, तुम समझ जाओगे मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. एंड इट्स लाइक जादूगर थोड़ी है भाई हम लोग, कोई किसी के दिमाग में. In India it's like काफी लोगों को like अजीब लगता है, like when I was talking to my parents कि like psychologist के साथ हम podcast करने हैं, they were like कि you know mental illness वगैरह इतना भी चीज है नहीं and stuff like that.
तो वो रहता है, लाइक इंडिया इज चेंजिंग स्लोली, आई गेस वो धीरे धीरे होएगा इंक्रीज, तो अवेयरनेस बढ़ जाएगी इसकी एट द एंड। या एंड द मोस्ट कॉमन थिंग इज, कोई भी बोलता है ना कि लाइक मैं थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, लोग बोलते हैं कि ये सब तो बीमार लोगों के लिए होते हैं, या कि तुम ठीक हो, अगर तुम नहीं तो तुम बीमार हो। हम्म दैट इज लाइक, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट, कि सिर्फ बीमार लोग ही जाते हैं ऐसे नहीं ब्रेन नहीं, का ऐसे 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 जरूरी नहीं होता। लोग बहुत अलग अलग रीजंस की वजह से आते हैं। अ, अगर आपको एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है एंड यू आर फाइंडिंग इट टफ टू डील विद, so you can go to a psychologist to talk to them if you're finding uh, if you feel like there's something wrong in your life. And sometimes people just go to talk क्योंकि उनकी दिमाग उनके रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत चल रही है, उनके दोस्तों के साथ कुछ दिक्कत चल रही है, एंड people need a place to vent and understand themselves better. तो ऐसे जरूरी नहीं होता कि you need to have a diagnosis या you need to have an illness before you can go there. उसका ना एक ग्राफिक होता है जहाँ पे एक बंदे के दिमाग में सारी थ्रेड्स ऐसे बंधी हुई होती हैं, and the psychologist just helps you untie them and sort them out. So that's basically what we do. It's not necessary कि आपको कोई बीमारी होनी चाहिए या फिर आपको कोई serious, rearranging the things in a better way. yeah, exactly, helping you rearrange the things in a better. Interesting. Yeah, like काफी लोगों को लगता है ना कि गर्ल्स को मूड स्विंग्स आते हैं, राइट, बट इट्स क्वाइट कॉमन इन बॉयज एज वेल, राइट। Yeah. काफी लोगों को पता नहीं होता कि बॉयज के अंदर भी मूड स्विंग्स आते हैं। सो लाइक हाउ दिस वर्क्स, लाइक ये पहले जेंडर डिफरेंशिएशन, लाइक क्यों ये बात बाहर नहीं आई कि बॉयज को भी होती है, लाइक दे डोंट फील इट मच। सो Yeah, we don't feel it much, we act it out. तो मैंने अपनी अंडरग्रेजुएट में एक रिसर्च करी थी अबाउट डिप्रेशन इन मेन एंड वुमेन and how it's different, how it's expressed differently. So I found कि women, when they're feeling something, they verbalize it, कि उनको बोल देते हैं कि मेरे को ये फील हो रहा है, मेरे को ये इस वजह से फील हो रहा है, and they have avenues to talk about it. कोई उनको सुनने को तैयार हो ही जाता है, दोस्त होते हैं, फैमिली होती है। हम बॉयज के पास बचपन से ऐसा कुछ ज्यादा होता नहीं था। बचपन में तो हमें यह था कि शेर लोग रोते नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है, एंड फिर हमने दबाना शुरू कर दिया, फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ जाते हैं तो हमारे इमोशंस और थोड़े नम, एंड ऐसा तो है नहीं कि इमोशंस हमारे टर्न ऑफ हो जाते हैं, दे कांट बी टर्न ऑफ एंड दे कांट बी रिप्रेस्ड फॉरएवर. So what happens is that they come out in behavior. So a person will be very involved in some activity and suddenly they'll be like चलो मेरे को अकेले रहना है, मेरा हो. That is also a mood swing. वो हमें लगता नहीं है कि वो mood swing हो रहा है, and हाँ, हमें लगता है कि बस ये तो ऐसी बस इसका मन उठ गया होगा, but that is a mood swing in itself. That sudden behavior out of nowhere. That is a mood swing, and it happens very often in men कि बाहर गए हैं दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं, and फिर एकदम से हो जाता है कि बस ठीक है, हो गया, बस ठीक अब कर जाना, now I'm done. तो ऐसा नहीं होता कि लड़कियों के पास कोई ऐसे मोनोपोली है मूड स्विंग्स की. हमारे भी इमोशंस अलग तरीके से आते हैं बस, लेकिन इमोशंस ही होते हैं. That's right. वो तो yeah. So एक और मेरे पास एक क्वेश्चन था, लाइक अभी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी डामर करके, जेफरी डामर के ऊपर. तो सीरियल किलर्स का जो माइंड होता है, इनको मतलब कि बाद में प्रिजर्व करते हैं स्टडी करने के लिए. अब जेफरी डामर का तो डिस्ट्रॉय हो गया था, बट एग्जैक्टली मतलब कि क्या सिचुएशंस होते हैं इनके माइंड में जो एक्चुअली में इनको ऐसा मतलब मॉन्स्ट्रोसिटी पे ये लोग चले जाते हैं बाद में. Like they don't feel emotions like after a specific period of time के बाद. तो ना इसका साइकोपैथिक बिहेवियर से रिलेशन है, एंड वी डोंट एग्जैक्टली नो ऐसा होता क्यों. ब्रेन के रीजन्स में तो हमें अभी तक बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, इसलिए हम उनके ब्रेन्स को प्रिजर्व करते हैं ताकि वी कैन फिगर आउट इफ देयर इज समथिंग डिफरेंट इन देयर ब्रेन्स और इफ देयर वाज समथिंग डिफरेंट अबाउट देयर न्यूरल स्ट्रक्चर्स व्हिच लेड टू दिस कंप्लीट साइकोपैथिक बिहेवियर. तो साइकोपैथी में क्या होता है, यू डोंट फील एम्पैथी, यू डोंट फील इवन आपके जो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं ना, सो वी हैव मिरर न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन which if we see someone crying in front of us, those mirror neurons fire and they initiate crying in ourselves as well. वो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम रोने लग जाते हैं उसी मोमेंट पे, but it gives us that reaction internally. जब हम yawn करते हैं तो फिर दूसरे लोग भी yawn करते हैं. Psychopaths don't have that. If you yawn in front of a psychopath, they won't yawn back. अब इसका मतलब ये नहीं है कि if you yawn in front of a psychopath, please
not go there. नई स्ट्रेटेजी साइकोपैथ्स को पकड़ने के लिए दोस्तों. But yeah, Yeah, that's great. but Like, yeah. So serial killers में they don't feel that they don't have the normal emotional reactions that we do. They don't have the normal uh, mirror effects that we do among our social interactions. So उनके लिए these things are just normal. Just like drinking water is for us, Jeffrey Dahmer के लिए it was eating people. Yeah, what's wrong with it? Why are you so mad? So yeah, it's a completely different personality set. Some theorize it's because of very rough childhood upbringing, abuse in childhood, maybe sexual abuse in childhood. But like again, we don't know for sure. yeah. Like how to tackle looping thoughts जो like पावर करते हैं, तो उसको tackle कैसे करना चाहिए? So a short-term technique that I use very often, and I used when I was struggling with them as well. I literally used to shout, stop whenever they came up. So I could see myself looping. I could see myself spiraling. कि मेरे 2 साल का ड्रॉप हो गया, अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, फुल टेक मी सीरियसली, इतना टाइम वेस्ट कर दिया, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होगा. एंड आई वुड स्टॉप राइट देयर. ठीक है, दैट यूज्ड टू हेल्प मी. आई यूज्ड टू शेक माय हेड वेरी ऑफन कि ऐसे मतलब Yeah, yeah. less violently than that, but yeah, just something to reset your head in that moment. Right. So this works for a few weeks and a few months. उसके बाद भी अगर चलती रहे प्रॉब्लम, so maybe there is someone you need to talk to as well. That's really I had another question. Like, people say that boys are more competitive than girls. तो मतलब actually में ये होता है कि boys are actually more competitive than females. Define actually. Like मतलब कि लोगों का कहना है कि जैसे बॉयज तो जैसे लोग बोलते हैं कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, वैसे ही लोग बोलते हैं कि लड़कों को competitive ज्यादा होना चाहिए. right. कि बट आई थिंक कि competitiveness is a human nature. Like जैसे सर्वाइवल पहले हमारे लिए सर्वाइवल मेन Yeah. इम्पोर्टेंट होता था. राइट नाउ आवर प्रायोरिटीज इज डिफरेंट, राइट? Yeah, सो competitiveness like in money, in anything, but competitiveness. आई थिंक कम्पेटिटिवनेस हमारे अंदर ना बचपन से ही आती है, जब भी आती है. हम साइकोलॉजिस्ट कई बार बचपन की तरफ चले जाते हैं अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो. बट बचपन में जब हमें कभी रेस करनी होती थी तो फिर हमें होता था कि चलो जीत के आना है. एंड यू नो देयर वाज दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी. जब बेबीज को आप हाथ देते हो ना, उंगली देते हो, so they clutch at it, right? It's their reflex. So there was a study in, I think it was in UK, where they made female babies and male babies clutch their fingers, and they saw what the person whose finger is being clutched did. Okay. So for the male babies, when the male babies clutched their finger, the participants, they pulled away. They wanted to test baby's strength. Yeah, naturally, they weren't told to do that. They were like, let's see how strong the baby is. But when the female babies clutched the finger, they gave into it. They were like, oh, you're so cute. There you hold it. Right. So it's since childhood, since birth, this is trained in us that men will be challenged, men will have to compete, and women generally will not have to do that. But as we grow old, that fades away. And आजकल you see women are as competitive and as hardworking as any man there is. मतलब असल में तो I feel like a lot of women are way ahead of me personally. So yeah, I don't think gender differences they stay forever, or they stay they're just inbuilt, genetic. I think they can be learned and they can be done away with. मैंने कहीं से सुना था कि like girls are very good in multitasking, like they are trained to do that, and boys can't do multitasking that much easily जितने girls कर सकते हैं. So is that true? Like actually like जो different gender के brains differently work करते हैं. I'm not sure about the brain structure, but there have been studies that women multitask better
And again, उसमें multitasking का एक region होता था. I don't remember the exact name. Uh, there's the frontal lobe which basically coordinates a lot of different tasks. ठीक है? Right. So what in women, a particular part of the frontal lobe is more developed than in men. अब न्यूरोइमेजिंग की जो स्टडीज होती हैं ये बहुत like 40-50 at Right, most. तो इसमें से जो भी कंक्लूजन हम लेते हैं, we have to take it with a pinch of salt. But in some women, it was observed that that area is more developed than in men, which makes multitasking and divided attention easier for women than for men. So yeah, there is some neurological basis to it, but again, we need more studies on it to have a better understanding. Right. तो हमने आपके आने से पहले हमने आपका थोड़ा प्रोफाइल चेक करा था, तो वहाँ पे आपका था माइंड ट्यूशन. Hmm. तो हाउ डिड यू स्टार्टेड ऑफ, लाइक प्लीज टेल अस, वी वुड लाइक. So the idea, उसके जो seeds थे ना, they started in 2014 when I was preparing for NEET, AIPMT at the time. लेकिन मेरे को आइडिया स्ट्राइक किया in 2020 when I was preparing for my masters in psychology. उसके भी entrance exams होते हैं. So that's when the idea actually came together. So my girlfriend was struggling a lot with competitive exams का idea because it was the first time she was appearing for it. तो competitive exams बहुत different होते हैं, negative marking होती है, MCQs होते हैं, time limit होती है, and the syllabus is huge. So how do you deal with that? Right. तो अब I had prepared for NEET, I had prepared for AIPMT, तो मेरे लिए था कि हाँ ये तो आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं. But for her it was very difficult. Like अगर एक mock test में कम marks आ गए तो it was very anxiety provoking. अगर एक question ठीक से नहीं कर पाए तो it was the end of the world. And that's when I realized that there is a huge mental aspect when it comes to competitive exams. And that's when I remembered one of my classmates in 2015 who was genuinely a better student than I was. He was from a village nearby, and he was genuinely more intelligent than me, more hardworking than me, and more dedicated towards this exam than I was. So if I was giving the exam 6 hours, 7 hours a day, he would easily give 12, 13 hours every day. And मतलब, it was a certainty कि मेरा तो हो ही जाएगा, but he will definitely get a better rank than I. But when the exam day came, his parents were there with him to drop him off, and it was just a completely different environment. You must have appeared for some competitive exams. Yeah. The environment is completely different. The nervousness on the day is completely different, and you literally can mix it all up in your own mind. So at the end, you'll end up thinking कि ये भी आता था फिर भी नहीं कर पाए, ये भी आता था फिर भी नहीं कर पाए. Because the एग्जाम pressure. देने के बाद. Exactly. So there is a very important mental aspect that goes to these competitive exams, which is what I'm training students for. So I combine sports psychology, which focuses on performance enhancement and mental training for performances, and I mixed it with counseling psychology. Because you talk to the students preparing for these exams, they just want to talk. They just have so much pressure. They're just like, हमें निकालने दो, we just need to vent. So I make counseling and sports psychology and try to improve their performances. And even if their performances improve by like 10-15%, that is a huge jump when it comes to the exams. And that can be a make or break, ultimately. So that's what I'm going for. 10-15% improvement, nothing more, nothing less. And that will ensure that you have a better performance than you would have otherwise. Right. Like I have heard so people who do yoga on a daily basis, उनका ब्रेन का कोई पार्ट होता है जहाँ पर फियर प्रोसेस होता है, लाइक जो फियर होता है वो कैलकुलेट होता है, जो भी है, राइट, वो श्रिंक हो जाता है. इट्स दैट ट्रू? लाइक डूइंग योगा, लाइक सो दे फील फियर lesser than others. It's like that. I don't really believe that, because brain is a very dynamic organ. It's ever changing. It's even when I'm talking to you right now, my brain is constantly changing. Even when I'm drinking the water, my brain is constantly changing. So to think that it can be changed permanently, like yoga helps, definitely it helps. It helps a lot of people. But I don't think we need to have a neurological basis which is so thin for it to become more valid. And
आजकल ऐसा है कि if you can find a neurological basis of anything, it suddenly becomes more valid. But I don't think we need that. Yoga is enough in itself, and we don't need something which has a very small sample size to give it more beauty. Yeah. Mhm. You want to go, Rudraksha? सो मेरा एक क्वेश्चन था, बट आई डोंट थिंक कि इसका कोई आंसर होगा, बट people get influenced easy towards like the things which are not supposed to, like cigarettes. People tend to go for cigarettes because they think it's cool, like मेरे को मना करा, they Or know, knowing that but fact it's addictive, but still they choose that. but still people do that stuff, like mostly today's youth, आजकल के जो बच्चे हैं, उनको क्यों होता है मतलब ऐसा कि जो चीज हमको मना करा है वही करना? Specifically क्योंकि हमें मना किया. When you deny something, when you put it something beyond one's reach, it becomes like a treasure of sorts. Ki, oh wow, we were told not to do that. I wonder what that feels like. And उस point पे we don't really think if it will have good consequences or bad consequences. Sensation seeking that we're going for. And again, youth में it's time where you're forming your own identity, and parents के साथ तो again it's like you either give in to their identity or you start having some issues with them. And when you're having issues with your parents, you end up thinking कि अच्छा उन्होंने वो भी नहीं करने दिया था, I wonder what that would be like. उन्होंने ये भी नहीं करने दिया था, I wonder what that would be like. And you're just trying out everything possible. Addiction तो फिर ultimately उसमें एक social acceptance भी आती है. We don't like addiction to cigarettes or drugs, but we are okay with addiction with alcohol sometimes. We have offers on it. We have buy one plus one. We have happy hours every week, right? And coffee की तो बात ही मत करो. Coffee is, I genuinely know I'm addicted to coffee, but I Indians के लिए चाय, to be honest. try coffee, caffeine, right? And sugar तो फिर है ही the most addictive substance on this planet. Podcast के पहले भी मैं sugar ही खा रहा था. Yeah. So you know, addiction is it has a social mandate all the time, and the social mandates are changing all the time. So I can see a future where we are okay with drugs being a part of, just weed is being legalized in many parts of the world, right? So you would see that in the parts where weed is legalized, there will be fewer people who are using it. क्योंकि हाँ ठीक है, अब इसका जो हुआ था वो नहीं रहा ना, अब तो हो गया, now it's allowed. Normalize हो गया है. बीच में आ गया वो हमारे. Yeah, exactly. It's mainstream now, so we don't want it anymore. Like so like lucid dreaming brain को affect करता है, like because like सोते हुए your brain is awake, right? So it can take decisions. So does that affect sleeping cycle as well? Like किस तरीके से उसका impact पड़ता है? Because मेरे को बहुत like normalized है मेरे लिए lucid dreaming होना. And yeah. What is lucid dreaming like for you? किस type के dreams आते हैं? So basically like it's like you are in the dream, right? But so whenever I take the actions, whatever I think, it becomes possible, like वो dream के अंदर ही. So like वो मेरे को बहुत ही normally आते रहते हैं on a like weekly basis पे कि एक दो बार तो आ ही जाते हैं. So like so does that damages the brain, और क्या मतलब ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है, मेरे को वो जानना है. Honestly, we don't know. Neuroscience does not know, psychology does not know. Right, because dreams are genuinely very complex, both neurologically, psychologically, and we have been trying to study them for at least 150 years now, and we know very little about them. Why do they happen? How do they happen? जो कंटेंट आता है उन ड्रीम्स में वो कहाँ से आता है, वो ही कंटेंट क्यों आता है, and how does it affect our brain ultimately? There's very little that we know about dreams. एक फ्रॉइड ने इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स लिखी थी 100 or so years back, but like yeah, that's pretty much it. That's all we know, and that wasn't even a very scientific book. So yeah, we don't know a lot about dreams. Right.
मैंने So like we काफी talk. yeah go on. Go. Okay, so like Gen Zs are like really good in recognizing patterns, right? So like पहले like so मैं अगर अपने पापा को फोन पकड़ाता हूँ, right? And if they saw any ad on Facebook ad, so they don't know that's a ad, right? And they click on that. But हमें पता लग जाता है कि वो ad है and we scroll down. Like how so generation gap है basically ना. But still like Gen Z are very good in understanding patterns, like so is there any difference between that, like generation to generation ऐसा क्या difference है जिससे like they are really fast in adapting patterns, मतलब बहुत फटाफट उन्हें पता लग जाती है. I think ये upbringing में है because the that's the mainstream has happened in the last 20 years, right? Right. जब Gen Z was growing up. So when we were growing up, we saw the internet coming up, Right. and we got used to ads trying to target us. So around 2008 तक ये होता था कि you were the center, the customer was the center of the internet. अगर कोई भी कंपनी होती थी तो it was like we need to make your experience better. उसके बाद हो गया कि we need to sell you ads and more ads, and that just trained the Gen Z mind, which spent a lot of time on the phone at that time. जब बच्चे होते थे तो फोन पे रहते थे to recognize this कि what is it trying to sell us. So whenever something is trying to sell us, we know something's off. हमारे parents they used to be like this with the on the road salesman. तो अगर कोई आपको रोड पे मिलता था and I would genuinely not be able to tell if someone is a salesman on the road. ठीक है. My parents they know कि ये कुछ बेचना चाह रहा है, इससे दूर रहो. ये आपको आके आपको कोई प्रेशर कुकर बेचेगा, इससे बात करने का फायदा. MLM techniques. Right. But yeah, that's great. तो मैं अभी जो पूछने वाला था वो था कि people tend to self diagnose them with mental diseases. Like मेरे को भी था पहले कि जैसे मेरे को ना कई चीजें एक सर्टेन वे में मेरे को पसंद चाहिए थी कि ये जो चीज रखी हुई है इसी हिसाब से. लोगों ने कहा तेरे को ओसीडी है. ओसीडी लोगों के बोलने से मेरे को भी लगा मेरे को ओसीडी है, बट एक्चुअली में ओसीडी बिल्कुल ही एक सीरियस Different प्रॉब्लम है. तो लाइक इज इट रियली हार्मफुल कि तुम अपने आप को ही सेल्फ डायग्नोज कर लो? Yeah. It's very harmful to you and it's harmful to the society as well. क्योंकि as you said, अगर आपको लगता है कि हमको OCD है because we like things in a certain way, when someone is telling their actual story with OCD, you'll think कि उनको भी यही होता होगा, and you'll think कि मेरे को तो बड़े आराम से ठीक हो गया था, उनको नहीं हुआ. People around you will think हम जानते थे इस बंदे को जिसको OCD था वो तो brain में गड़बड़. And it creates a false image of what OCD is. So I think 4 or 5 years back, Hotstar ने पूरी ad बनाई थी about where they were talking about Monica का OCD. Yeah. And that's not OCD. What is wrong with you? I write them an email and they finally stopped after 2 weeks. Ki, okay, maybe we made a mistake. But it's very common to diagnose yourself with mental illnesses. Very, very common. Especially depression तो आजकल इतना commonly self diagnose होता है कि 2-3 दिन sad रह गए और हो गया कि फिर 4-5 दिन बाद ठीक हो गए और बोले कि अरे मैं तो ठीक. I was feeling so low yesterday. Now I'm okay. I was depressed yesterday, but I am today depressed tomorrow. लोगों को लो फील करने में एंड डिप्रेस्ड फील होने में लोगों को डिफरेंस, लोगों को लगता है सैड हुए तो डायरेक्ट बस डिप्रेशन हो गया हमको. Exactly. Like okay, so how to tackle overthinking as well? Like काफी लोगों को देखा है मैंने. Like so for example, like जैसे मेरे बोर्ड्स के एग्जाम्स थे तो आई वाज लाइक मैं बहुत ओवरथिंक करता था कि बस मैं पास हो जाऊँ एटलीस्ट बोर्ड्स के अंदर. सो लाइक वो फिर 24/7 थॉट में रहता ही है, माइंडसेट के अंदर ही रहता है. इवन दो इफ यू ट्राई टू कि नहीं याद रहना चाहिए, लेट्स डू समथिंग एल्स एंड स्टफ लाइक दैट. सो लाइक हाउ टू ओवरकम दैट? So it helps to have a field of thinking defined. जब overthinking कर रहे होते हैं ना तो फिर ये करते हैं okay, what's the worst that can happen? What's the best that can happen? Right. जब when you decide this, you have a field, you have limit set कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, कम से कम ये हो सकता है. उसके बाद everything else is within this only, and you have to decide whether this is acceptable or not. If it is not acceptable, if there is a way that you can go towards the best that can happen, you can work towards that. If there is a way that the worst can be avoided, you can run away from that. But having a field, having a boundary set na,
That helps a lot. अगर मैं बोर्ड एग्जाम्स के बारे में सोचते सोचते ये हो जाए कि okay, what's the worst that could happen? फेल हो गए Oh, एक फील आ गई is the worst that can happen कि you'll die. That Yeah. एग्जाम देते देते वही, देते ही देगा और right. हो सकता है बट okay, it's not very likely. Yeah. ठीक है. The worst that can happen is that you'll fail. The best that can happen is you'll pass and you'll do very well Yeah. in every subject and you'll exceed all expectations. Right. ठीक है. So you can either avoid the worst that can happen as much as possible कि बस पास होने वाले नंबर ले आओ, or you can approach the best that can happen as much as possible. But at least you know that these are the two extreme possibilities. Everything else is in the middle only. Right. This is clear. So we've talked about the childhood a lot, like सबका बचपन होता है. So what was your childhood like? कि आपका मतलब कि पूरा childhood कैसा गया आपका as a फिर बाद में psychologist जब बने. What was the whole story? It was a pretty normal childhood, यार. मतलब I have a couple of I have two elder sisters, and my dad's a surgeon. My mom was a lecturer in English. I grew up in Hisar in Haryana. It's like a tier 3 city here, and very normal childhood. Studied in an English medium school. Was always the topper of my class. I always used to stand second in my class. My best friend always used to top in my class. So used to always play some sports. Cricket, football का हमेशा से शौक रहा है. Participated in quizzes, speeches, declamations, and was house captain in 12th. So normal childhood. Was always the high achiever. फिर उसके बाद डिप्रेशन के चक्कर में I was for 2 years not the high achiever, and that messes with your identity कि भाई I used to be so much and now I'm so little. But I thought कि ठीक है, if I was the high achiever I can be a high achiever in adulthood as well. So that's when I got into psychology. That's when I started doing everything that I'm doing. जैसे ये LinkedIn पे कंटेंट बना लिया, ब्लॉग लिख लिए, बुक्स लिख ली. So that's just maybe trying to just get back to that level personally. Right. नहीं मैन लाइक मैं पर्सनली खुद स्क्रॉल कर रहे थे लाइक यस्टरडे हम दोनों लाइक डिस्कॉर्ड पे बैठ के वी वर जस्ट यू नो स्क्रॉलिंग योर लिंक्डइन एंड लाइक काफी कुछ नया नया दिख रहा था. आई वाज लाइक ओ डैम इतनी सारी चीजें. But Oh yeah, I'm just juggling so much, trying to just get back to that level. Honestly, I think I'm somewhere trying to do that also. that's great. So so like मैं पूरा ही like बहुत ही engaging conversation हो गई है तो so yeah, मजा आया. It was actually good though. Yeah. So Yeah, एक go. question था मेरा like you know especially after 2020 जब सारे लोग घर में थे, काफी लोगों को social anxiety होनी शुरू हो गई. So the easiest way to tackle social anxiety कि you start engaging with people. क्योंकि I suffered with this, but gradually I overcame this. But the easiest. I think that's the way, gradually going into it. So I honestly suffered with social anxiety तो नहीं, but I get nervous around people and talking to people, especially strangers. So don't talk to strangers. Maybe just talk to someone you know already. Try to hold the conversation. Try to see how it goes, and slowly try to build up to it, to a point where you can have a conversation with anyone. मेरे से अभी तक नहीं होती. So I have a conversation with people around me. मम्मी पापा से बात कर ली, 2-3 दोस्तों से बात कर ली. If I go to the gym, I talk to a few people there. I'm trying to talk to a few people slowly. Ki, okay, what are you working on today? How's it been going? And maybe धीरे धीरे I'll be in a point where I can just talk to anyone. So it's always step by step. ऐसे नहीं होता कि आपको एक जादू की झड़ी मिल जाएगी and then you'll just talk to anyone. You'll be a serial conversationalist. So 3 tips to overcome social anxiety दोस्तों. So go step by step. Try to practice and see where it's going, and don't make anyone else uncomfortable. क्योंकि हम practice के चक्कर में ना हम भूल जाते हैं कि the other person is there as Yeah. well. So try to be honest, try to be yourself, but also make sure that you're not making anyone uncomfortable in your presence. Like psychologists deal with many like other जो काफी और लोग होते हैं जिनके like mental issues होते हैं. तो क्या psychologist को भी एक और psychologist की जरूरत होती है? Like Oh yeah, definitely. तो उनको क्या कहते हैं? So there is any special term या फिर वो it's like दूसरे नहीं, psychologist? they're the psychologists. So Got it.
they're usually the ones with more experience, and usually they specialize in people who are already therapists. So ये एक specialization होती है which you develop over time, over experience only. इसका ऐसा कोई course नहीं है. Right, So we end up going to the more therapists, more experienced ones usually. right. That's interesting. डॉक्टर को एक और डॉक्टर की जरूरत है. Yeah. Yeah. लोगों का वही होता है, पीपल थिंक कि तो तुम तो साइकोलॉजिस्ट है, तुमको तो आता है अपने आप को ठीक करना. डॉक्टर्स के साथ भी यही होता है, तुमको तो पता है कौन सी दवाई लेनी है. Right. पूछो यार, अभी ये तो कि But that's actually like मेरे को like so मैंने 2-3 लोगों से सुना था कि साइकोलॉजिस्ट को भी साइकोलॉजी की जरूरत होती है. And I was like, oh, okay. But यार because ये इसलिए होता है because we are not very rational personally, individually. जैसे हम जब therapist की तरह behave करते हैं, we try to be objective, we try to give them a neutral, try to give our clients a distant point of view, but we can't distance ourselves from ourselves, है ना? right, So right. when I say that I work out 6 days a week and I just cannot stop because I feel like something terrible will happen if I stop. I know that's not rational. Yeah. But in order to work on it, I need someone with me who can actually help me with it, who will be the objective, neutral reference point for me. So it's the human condition that we're not perfect, and we're not perfectly logical, we're not perfectly rational, which is why we always need someone to hold that rationality for us. Got it. तो अभी फिटनेस की बात करी आपने, तो लोगों का कहना है कि फिजिकल फिटनेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेंटल फिटनेस को इफेक्ट करता है. तो इज दैट ट्रू? To a point, yes. Because जब आप physically fit रहते हो, physically active रहते हो, your body is usually full of endorphins, which is like your own pleasure hormones, right? But ultimately, the more you work out, the more physically fit you stay, the effect of those endorphins wears out. So it's like your body gets, and then you need to work out more for the same rush, for the same high. And after a point, if you work out more and more and more, you end up injuring yourself. So it's like, to a point, yes, for people who are completely sedentary, who don't have active lifestyle at all, उनके लिए होता है कि आप थोड़ा एक्टिव रहो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा वॉक कर लो, that will help you feel better. लेकिन a lot of bodybuilders, a lot of people who go to the gym, they're absolutely miserable, because they are just completely used to the endorphin rush. They are completely used to the feeling of the weight on your shoulders or on your body, and it just does not, it feels numb after a point. Like so like काफी जो लोग होते हैं ना, like for example CEOs and entrepreneurs, they work like almost 12 hours a day actively, right? So वो after a time वो exhaust हो जाते हैं, so they started feeling, so they can't feel emotions that much. So like why this happens, like doing more work than it's like normally जो काम होता है उससे ज्यादा करने से, like do that affect brain as well, like जो emotionless हो जाते हैं इंसान फिर after a specific period? So emotions, any emotion that you feel, it requires resources from your body. Right. So when I'm feeling scared, my heart beats faster, my throat dries up, my stomach stops, my digestive system stops, all of that requires energy. It requires bodily resources. When people are working 12 hours a day, 14 hours a day, सारे resources उसी काम में निकल जाते हैं. उसके बाद और कुछ resource बचता ही नहीं है कुछ करने के लिए. You're just done, your body is done, and you can't feel anything after that, क्योंकि आपके पास कुछ feel करने के लिए है ही नहीं. हम जो भी emotion feel करते हैं, हम brain में feel करते हैं, लेकिन body में वो में feel होता है, मतलब it generates in the body. Yeah. When I'm feeling sad, I feel a bit lower in my chest, as a sinking सी feel आती है. When I'm feeling happy, I feel like my heart is just swelling up or my chest is swelling. All of that is a bodily sensation that requires resources. And the entrepreneurs, the CEOs who work so much, they are completely, as the technical term is, burnt out. They don't have resources to feel any emotions, and that ultimately affects their decision making. It affects their work productivity,
and it affects their social relationships, which is why they also need a lot of mental health care as well. So I had another question. Ki, people who are depressed or like feeling low in life for quite a while, they tend to join some kind of a religion. Like people turn Catholic, or people like start following Dalai Lama, or like some kind of a group, and that actually heals them. उनको अच्छा लगना feel हो जाता है दोबारा. So how does that work? कि तुम सिर्फ एक ग्रुप में जाते हो and तुमको मतलब कि तुम्हारा डिप्रेशन ठीक होने लगता है. There's इसका मैं neuroscientific answer नहीं दूंगा. I'll give an existential answer to that, because a lot of depression, sometimes in a lot of cases, depression is a result of a lack of meaning in life. It's a lack of a goal in life, and people are like, what's the point of this? So I'm waking up every day, I'm doing the same thing over and over again, and I'm going to sleep, and I'm then waking up the other day, and what's the point? Where's the meaning coming from in my life? And religions promise meaning. So Christianity, Hinduism, Buddhism, Islam, whichever you go for, religion offers meaning कि आप जो कर रहे हो, it has a purpose. अगर आप इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हो, तो आपको अच्छा पुनर्जन्म किसी अच्छी जगह पे होगा या फिर अच्छा होगा. Christianity में it's like you'll go to heaven. Buddhism में it's that you'll break free from the circle, from the birth rebirth का cycle, and मोक्ष मिल जाएगा. And that gives us meaning. So existentially looking at it, people feel better because it gives us meaning. It gives us a purpose, religion. And we are just suckers for any kind of meaning. हमसे nihilism सहा नहीं जाता. We need meaning somewhere or the other. That's right. That was very interesting and engaging conversation with you. बहुत मजा आया. Like हमारे जो like first episode के like जो पहले guest थे हमारे, they are like also into like very scientific reasons then and stuff like that. So that's why we also plan to call a psychologist, right? And it was like बहुत मजा आया. Like काफी interesting, valuable information मिली होगी. And like to all the viewers who are watching, make sure to check it out, Mind Tuition. मैं आपके social media profiles वगैरह सारी link is in description. So make sure to check it out. And बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. And thanks for being in Vokl Youth. Thanks a lot for joining. Thank you so much. It's very engaging, and you are very inquisitive. I enjoy that. And the questions I could not answer, maybe a neuroscientist can. So maybe you can have someone who's a neuropsychologist in the next we'll try to reach out. Sure. Cool. Thank All right. you. Thank you. Much. Thank you. Thanks a lot. Right.